So as far as doping concentration or doping profile is concerned, we know emitter is having very high doping, and base is having a moderate doping, and collector region is having a low doping. So when you have very high doping, then conductivity sigma will be very high. High doping would mean higher number of charges, and it would mean higher number or higher conductivity. So conductivity of emitter is high, and conductivity of base is moderate, and conductivity of collector is low. So if conductivity is high in emitter, then resistivity is low. 1 by uh, rho is inversely proportional to sigma. ठीक है, तो emitter की है low और इसकी है moderate. Then you have moderate in base, and you have high resistivity in collector. Okay, now based on this concept, now we'll discuss certain parameters in common emitter, common base, and common collector. So you have input resistance, which is something like this. Uh, Input resistance in BJT. You can have another output resistance. Now see, common emitter में input terminal is your emitter. In common emitter, your input terminal is your input terminal is base. In common emitter configuration, input terminal is base. So what will be the resistance, input resistance? It will be moderate. तो इसकी जो resistance होगी वो होगी moderate. इसी तरीके से common base में हमारी जो input terminal होती हैं, in common base, emitter is the input terminal. So what is the input resistance? Then it is low. How much is that? It is RE, yani emitter resistance. In common collector, your input resistance is high. Similarly, in common emitter, your output terminal is collector. In common emitter, your output terminal is collector. Then your output resistance will be high. Okay, your output resistance is high because resistivity is high. तो कितनी होगी output resistance? RC. Similarly, in common base, you have also your output terminal is collector. आपके common base में output terminal है collector, तो आपकी output resistance भी होगी high, and it will be equal to collector resistance. In common collector, your output terminal is emitter. In common collector, your output terminal is emitter. That is why your output resistance will be low. And how much is that? Equal to R of E. So then you have voltage gain. You have to remember voltage gain in common emitter configuration, it is high. It is very high. Okay. Similarly, in common base में भी आपका voltage gain high होता है. But in common collector, it is very low. Okay, it is generally equal to 1. तो इसमें ज़्यादा आपको voltage gain नहीं मिलता है. These are just parameters you have to remember. Similarly, you have current gain in common emitter. Current gain in common emitter, you know that in common emitter, current gain is beta, and beta is very high. Beta का value काफी ज़्यादा high होता है. In common base, current gain is alpha. And what is alpha? Common base में alpha is low. How much is that equal to? Nearly equal to 1. And in common collector, current gain is also high, and the value is 1 plus beta. And it is basically gamma. Current gain is gamma. Here you have power gain.
Then you have power gain. Power gain is high. Power gain is high. Then it is moderate. Then you have low. Okay. Now the most important parameter is phase shift. Phase shift between input and output. Phase shift between input and output. In common emitter configuration, phase shift between input and output is 180 degree. That means when you have a common emitter amplifier or a common emitter configuration, if at the input you give input like this, at the output you will have out of phase by 180 degree. तो आपका common emitter configuration में the phase shift between input and output is 180 degree, and there is no phase shift in common base and no phase shift in common collector configuration. Okay, so these are various parameters in these configurations. One is input resistance, output resistance, voltage gain, current gain, power gain, and phase shift. Based on these parameters we decide which one is appropriate for us. Okay, I said generally common base configuration is not used. I also said generally common collector configuration is also not preferred. These two are not preferred, but common emitter is generally preferred. Why? Because in common emitter configuration you have both voltage gain high and both current gain, they are very high. They have a good voltage gain, and in common emitter configuration you are able to have a good voltage gain and good current gain. While as in common base or common collector, you can have either voltage gain high or current gain high. You cannot have both high. Okay, one of them is high, another is low. It is only this configuration where you are able to achieve both current and voltage gain simultaneously very high. So that is why common emitter configuration common emitter configuration is generally preferred because of uh, AV and AI means voltage gain and current gain is high. ये दोनों high है, ठीक है, ये दोनों high है. So both of them are good. ये दोनों अच्छी magnitude में है. So you are able to achieve both voltage and current gain. That is why you use mostly common emitter configuration. Common emitter configuration. Now the second topic is limits of operation. So whenever we operate a BJT, what are the various limits of operation? Limits of operation for BJT. BJT को किस लिमिट तक आप ऑपरेट करा सकते हैं? Okay. Now see, you should remember I have already told it before that for each transistor there is a region. There is region of operation. तो हर किसी ट्रांजिस्टर के लिए एक region of operation होता है on the characteristics, on the output characteristics, on the characteristics. I said in the class that it is active region. Okay, so that region basically ensures that the maximum ratings are not exceeded. Okay, and output signal exhibits minimum distortion. So what is the logic of operating a BJT only in active region? Active region में ही क्यों BJT को operate किया जाता है? One is that it ensures that BJT should not work or it should not operate beyond the maximum ratings.
For every device, there is a rated current that it can bear. For example, for a diode, it can bear 1 ampere current, and it can bear 1 volt of voltage at most. So it can handle some power which is equal to V into I. But if 2 or 3 or 4 amperes of current will flow through this, then it will get damaged. That so the rated current for this device is 1 ampere and 1 volt. So every device has its rating currents. It has its maximum ratings, beyond which it cannot operate, beyond which it gets damaged. So the purpose of operating a BJT in active region is to ensure that maximum ratings are not exceeded. Okay. The second thing, and the signal is not distorted. So somewhere here, if you have a BJT amplifier, you are giving a signal like this, then it is amplified. But if you give more amplified input, probably it will get chopped off at the top. So this signal is now distorted because it has not retained the shape. It has been chopped off. So in order to ensure minimum distortion in the signal and in order to ensure maximum ratings are not exceeded, we operate a transistor in active region. So that is why it is operated in the active region. So generally, how do we identify this active region? I said in the previous class also, if this is, for example, the maximum current equal to IC max that a transistor can bear, maximum current that a transistor can bear. And this is maximum voltage, VCE. This is VCE max. This is VCE max uh, that a BJT can bear. Okay, this is the maximum voltage and this is the maximum current. And we know that its VI characteristics are something like this. ऐसी हैं. So they are something like this. And we also know that there is a region here which is known as VCE saturation, which is this much. VCE saturation is nearly zero. VCE saturation is nearly zero, but it can be equal to 0.3 volt at most, not more than that. And we know that this is for a common emitter configuration, this is ICEO. ICEO. Okay, reverse saturation current in common emitter configuration. Then there is a curve in the VI characteristics which is like this, which mentions basically the region of active region of operation. So this all entire region here somewhere, this is the active region, this blue one. And what is this curve? This curve that we have here, it is known as PC max curve. It is known as PC max curve. That is here VCE comma IC will have maximum value. That means if अगर हम किसी भी अगर हम इस पॉइंट को या इस लाइन को एक्सीड करेंगे, से फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स हियर, in that case the power ratings will exceed. Okay, this is the maximum power that a BGT can dissipate. तो ये जो दूसरा रीजन है somewhere here which is the green one, इसमें हम ऑपरेट नहीं करा सकते हैं, इसमें हमारी मैक्सिमम पावर कर्व जो है वो वायलेट हो जाएगी, it will get violated, and there are very high chances that our transistor will get damaged. Okay, so what is IC max in this graph? IC max is maximum collector current, collector current in above figure. Okay, maximum collector current or continuous collector current in above figure. So it is somewhere in above figure. If we try to quantify it, हो सकता है इसकी है 1 2 3 4 and 5. So this is for example 10 milliamperes. This is
this is 20 milliamperes, this is 30, 40, and 50. So here IC max here it is 50 milliamperes, for example, in this graph. So it is 50 milliamperes from this graph. So what is IC max? IC max is basically the maximum collector current that can flow through the BJT and the BJT is still operating. If it exceeds IC max, then BJT may get damaged. And what is VCE max? What is VCE max? VCE max is maximum collector to emitter voltage, or VCEO. Okay, what does it specify? It specifies the minimum VCE that can be applied without falling into non-linear region. So this active region is a linear region. Apart from this region, whatever is outside this region, it is non-linear region. Non-linear region का मतलब है when you will give input, output will be amplified non-linearly. यानी ये बिल्कुल faithful amplification नहीं होगी. The shape of the output will not retain. Okay, it will not retain. So outside this is non-linear region, and it can be labeled as saturation also. Saturation region. It can be labeled as saturation region. मोमिन, आपको ये समझ में आ रहा है बेटा? सर ये थोड़ा सा रिपीट कीजिए. हाँ, आई एम ट्राइंग टू डिस्कस मैक्सिमम पावर कर्व. मैक्सिमम पावर कर्व का मतलब है, दिस इज मैक्सिमम पावर कर्व ऑफ बीजेटी, यानी बीजेटी में मैक्सिमम वोल्टेजेस एंड करंट्स कितनी फ्लो हो सकती हैं. रिमेंबर दैट पावर इट इज इक्वल टू V into I. So P max will be equal to V max into I max. So we are trying to analyze what is the maximum current that can flow through the BJT and maximum voltage that can be applied to it, so that some maximum power can be dissipated. हर किसी BJT का अपना अपना एक डेटा शीट होता है, according to which we operate it. We cannot exceed the ratings of a BJT. अगर BJT ऐसे बनाया गया है, एक डिजाइनर ने इसको बताया है कि it can bear, for example, 1 watt. So in that case, your voltage will be equal to 1 volts and current will be equal to 1 ampere. Then only we can say that it is wasting, or it is dissipating 1 watt of power. If it is being said in the BJT that maximum power it can dissipate is 1 watt, but we are applying 2 volts and we are trying to pass 2 ampere of current, it means the power dissipation is 4 watts now. When power dissipation is more than the rated voltage, then more heat will be dissipated in the BJT and the BJT junctions will be damaged. And within a jiffy, the BJT will no longer work. So we are trying to analyze what are the safer voltage and safer current levels for a BJT. Okay, so that is what I said, that maximum power dissipation for transistor defined. So transistor is defined by this relationship. So PC max, because power is equal to V into I, PC max will be now equal to IC into VCE. IC into VCE. Generally speaking, maximum power which is dissipated by a BJT is of order of 300 milliwatts. इससे ज़्यादा एक BJT नहीं कर पाता है power dissipate. If you exceed power, अगर आप voltage और current को और ज़्यादा बढ़ाओगे, then more heat will be dissipated, which is greater than 300 milliwatts, or more power will be dissipated.
In that case, the junctions of the BGT will be damaged. Okay. Now see, the saturation region is defined in this graph. What is the saturation region? Saturation region ये वाला है, somewhere here. Okay, it is this region. This is the saturation region. So saturation region is when VCE, this is VCE, when VCE is less than V saturation region. Okay, VCE saturation. So this is VCE saturation point. VCE saturation. जब VCE उससे कम होगा तभी आपका saturation region मार्क हो रहा है इस ग्राफ से. So we can write down here the saturation region. The saturation region is defined when VCE is less than VCE saturation. Okay, VCE saturation. So saturation region is defined when your VCE is not in this range, इस green range में नहीं होगा. तो कहाँ होगा? It is less than VCE saturation. So it means it will start from here and it will go all the way here, somewhere here. तो तब जाके आप कहोगे कि ये saturation region है. That's what I have written. The saturation region is defined when VCE is less than VCE saturation, and cutoff region, the cutoff region is defined when IC is less than ICEO. So what is the cutoff region? Cutoff region is this region. ये सारा region जो है ये cutoff region है यहाँ नीचे से. तो cutoff region में what is IC? This is IC axis. IC axis is ICEO. Okay. तो ये यहाँ से start होनी चाहिए नीचे यहाँ. तो ICEO is somewhere here. Okay, ICEO is somewhere here. It is somewhere here. So this is ICEO line. ICEO. And IC less than ICEO, it will mark cutoff region. तो नीचे से cutoff region है. वही मैंने यहाँ लिखा. The cutoff region is defined when IC is less than ICEO, or when IC is less than beta times ICBO. ICBO. Okay. Now, if the characteristic curves are unavailable sometimes, if these are unavailable sometimes, then you can calculate the power handling capacity or PC max by these two relationships. कभी कभार आपको characteristics curve नहीं दी गई होती है तब आप इनको ऐसे कर सकते हैं. By equation 1 and equation 2 से आप define कर सकते हो कि और equation 3 also कि how much power can be dissipated. Or we can say if the characteristics curves are not available, then we can say then we must be sure that IC, VCE and their product, because their product is power, their product uh, must fall into following range. ICEO. But what should we conclude now? We should say that IC and VC and their product must fall into following range. What is the range? This should be the range. IC should be greater or equal to IC or less or equal to IC max. यानी जो मेरी collector current है, it should fall in this region. So it should be less than IC max, but it should be greater than ICEO. ICEO तो ये level है. IC max ये point है. It should be less than IC max, but it should be greater than ICEO. So that's what I have written here. IC should be equal to, it should be less than IC max, but it should be greater than ICEO. That is the one equation. सर अगर आपने हमारे ग्रेटर इक्वल टू लिखा है यहाँ पे.
आपने अभी बोला ना ये आईसी इज लेस देन आईसीईयू। क्या बोला मैंने? फिर आपने अभी बोला ना कट ऑफ रीजन में हो जाता है आईसी इज ग्रेटर देन आईसीईयू, तो यहाँ पर नहीं, कैसे आ गया? मैंने कहा if characteristic curves are not given यस sometime, यस यस। then how can we define the region of operation? या पीसी मैक्स कर्व्स कैसे हम डिफाइन करेंगे? हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारा ट्रांजिस्टर कहाँ ऑपरेट होगा? जब हमारे पास ट्रांजिस्टर कर्व्स, देखिए अगर ट्रांजिस्टर कर्व्स हमारे पास दी हुई हैं, तब आपको पता है बाय विजुअल इंस्पेक्शन कि आपको इस रीजन में काम करना है, ठीक है। अब जब कर्व्स आपको नहीं है, तब आपको एक रेंज दिखानी है करंट की, क्योंकि आपके पास कर्व तो नहीं है। तो आपको पता है आईसी मैक्स तो दिया गया होगा, बीजेटी के ट्रांजिस्टर जो डेटा शीट है उसमें दिया गया होता है आईसी मैक्स, और आईसीईओ भी दिया गया होता है उसमें कि इसमें रिवर्स लीकेज करंट कितनी है और मैक्सिमम करंट कितनी ये कर सकता है बियर। तो उस दरमियान जो रेंज है, तब आपको करंट की, जब आप उसको ऑपरेट कराएंगे, कलेक्टर करंट की रेंज उसके दरमियान होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो वी आर ट्राइंग टू बेसिकली analyze or jot down the limits of operation. What is the limit between which the BJT can operate? तो आप इसको कहाँ ऑपरेट कराना चाहते हो? हमेशा एक्टिव रीजन में। तो एक्टिव रीजन है कहाँ? अगर आप विजुअल इंस्पेक्शन से देखोगे तब आपको दिखेगा फ्रॉम कर्व्स कि कहाँ पे है, लेकिन जब कर्व्स नहीं होगी, if the characteristic curves are not available, then what can we say? We have to define it mathematically then. तो मैथमेटिकली रेंज होगी पहले कलेक्टर करंट की और फिर वीसीई की। तो कलेक्टर करंट की रेंज होगी ये वाली, ठीक है, यहां से जो है, इट विल बी बिटवीन आईसी मैक्स एंड आईसीईओ। अब वोल्टेज की रेंज भी यहां से होगी, वो अब हम इसके बाद लिखेंगे, ठीक है। अब वोल्टेज की रेंज क्या होगी? एक तो होगी वीसीई मैक्स के दरमियान, इट विल स्टार्ट फ्रॉम वीसीई सैचुरेशन पॉइंट एंड इट विल एंड अप टू वीसीई मैक्स। तो इतनी रेंज होगी वोल्टेज की, और वहां से रेंज होगी वाई एक्सिस में करंट की। तो पहले हमने करंट की रेंज अब कही। आई डू वन थिंग, मैं इसको यहां से कॉपी करता हूँ इफ आई कैन। ओके, सो आई कीप इट हियर। देखिए, तो एक तो होगी करंट की रेंज, करंट की रेंज होगी आईसी, दिस इज ऑल आईसी, ये जो ये वाली एक्सिस है, दिस इज ऑल आईसी। तो आईसी की रेंज होगी बिटवीन आईसी मैक्स एंड आईसीईओ। दिस पॉइंट इज आईसीईओ। व्हाट विल बी द रेंज ऑफ वोल्टेज? वीसीई की रेंज क्या होगी? इट शुड बी लेस देन दिस पॉइंट। व्हाट इज दिस पॉइंट? इट इज वीसीई मैक्स। वीसीई, it is VCE max, VCE max, and it should be greater than this point. ये इस पॉइंट से ज्यादा होनी चाहिए। व्हाट इज दिस पॉइंट? VCE saturation, VCE saturation। तो ये होगी इसकी दूसरी इक्वेशन। जब आपके पास कर्व्स नहीं होंगी अवेलेबल, तब आप ब्लाइंडली कह सकते हो कि हमारी करंट इस रेंज में होनी चाहिए और हमारी वोल्टेज इस रेंज में होनी चाहिए इन जनरल। तब जब आपको वह पावर बताया जाएगा, what is the power you have dissipated in this range? In this range, you can say then power is dissipated, uh, it will be equal to VCE into IC, and the product of these two, इन दोनों का प्रोडक्ट भी होना चाहिए PC मैक्स से कम या उसके बराबर। तो व्हाट इज PC मैक्स? PC मैक्स दिया गया होगा आपकी डेटा शीट पे। सो इट इज गिवन इन डेटा शीट कि एक ट्रांजिस्टर इतना कर सकता है मैक्सिमम पावर डिसिपेट। आप करंट और वोल्टेज की लेवल्स इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हैं। सपोज यू हैव दिस टू 100 मिलीवाट्स, 100 मिलीवाट्स इसका दिया गया है डेटा शीट में। इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर लाइक दिस, आपको 1 मिली एम्पियर करंट लानी है, ठीक है। सपोज यू हैव 1 मिली एम्पियर की करंट होगी और कुछ कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेजेस होगी। व्हाट विल बी द वोल्टेज? इट विल बी 100 मिलीवाट्स डिवाइडेड बाय 1 मिली एम्पियर। दैट इज द वोल्टेज यू कैन अप्लाई। तो वीसी आप उतनी कर सकते हो, या उससे इनफैक्ट कम, तो या उससे ज्यादा।
मतलब उसी के अराउंड जो इस इक्वेशन से निकलेगी। अगर आपको दिया गया होगा डेटा शीट में कि पीसी मैक्स इज 500 मिलीवाट्स, तो 500 मिलीवाट्स तो आपका पीसी मैक्स है, और आप दे रहे हो करंट, फॉर एग्जांपल यू आर ट्राइंग टू गिव अ करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर्स, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वोल्टेज मिलेगी, आप उसको नहीं कर सकते हो एक्सीड। आपको समझ में आया रेहाब? आपको समझ में आया? यस सर, समझ आ गया। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, दीज आर बेसिकली इक्वेशंस फॉर लिमिट ऑफ ऑपरेशन फॉर ए बीजेटी। ये बीजेटी को आप जब भी आप बीजेटी को यूज करोगे, सी द एंटायर थिंग व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट इज दैट आई वुड समराइज इट इन दिस वे, that whenever you use a transistor or a BJT, you cannot apply voltages of your desire. आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हो कुछ भी voltage apply. You have to go through the transistor data sheet first. Then you have to identify, or you have to select what are the safe voltage and current levels which should be applied to it. अगर आप उनको अपने हिसाब से, जैसे कोई बच्चा उसने ड्यूअल पावर सप्लाई ऑन की, फंक्शन जनरेटर ऑन किया और 12 वोल्ट अप्लाई किया, ये भी चांसेस है कि ये बीजेटी डैमेज होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पीसी मैक्स कर्व उस वक्त एक्सीड हो गया है। तो इस चीज को पहले समझने के लिए यू ऑलवेज हैव टू कंसिडर इट इज डेटा शीट, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द वोल्टेज एंड करंट लेवल्स that can be applied. In other words, I can say you, I can, summarize it in this way कि हर कोई ट्रांजिस्टर हर किसी सिग्नल के लिए सुटेबल नहीं होता है। अगर आपको एक सिग्नल एम्पलीफाई करनी है, अगर आपको कोई सिग्नल एम्पलीफाई, बीजेटी एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर ऑल्सो, अगर आपको कोई भी सिग्नल एम्पलीफाई करनी है, आपको देखना है कि उसकी वोल्टेज लेवल कितनी है। सपोज यू आर ट्राइंग टू एम्पलीफाई द ह्यूमन स्किन से, जो ह्यूमन स्कार्प से जो सिग्नल्स आती हैं, अल्फा बीटा, या ब्रेन से अल्फा बीटा एंड गामा वेव्स, या कार्डियक वेव्स जो आती हैं, या इवन ईईजी या ईसीजी जो भी वेव्स आ जाती हैं, अगर आप उनको एम्पलीफाई करना चाहते हैं तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि उनकी वोल्टेज लेवल्स क्या है पहले। हो सकता है वो किसी बीजेटी के रेंज में आती ही नहीं है, वो उसकी आईसी वो उसको सैचुरेशन में लेती हैं या उनको कट ऑफ में ही रखती हैं, तो उसके लिए एक अलग बीजेटी होगा। हर किसी बीजेटी की अपनी अपनी लिमिट्स ऑफ ऑपरेशन होती है। इफ यू हैव वन बीजेटी फॉर एग्जांपल जिसका एक नंबर होगा, जैसे रेजिस्टर्स के अपने वैल्यूज होते हैं 10 के, 20 के, 30 के, इसी तरीके से बीजेटी भी बहुत सारे तरीकों के हैं। बीजेटी पावर बीजेटी भी हो सकते हैं, पीएनपी हो सकते हैं, देन यू हैव एनपीएन ट्रांजिस्टर्स ऑल्सो। बट the entire summary is that every BJT is not suitable for every operation or every signal. You have to choose a BJT very wisely for a particular signal. Why do we have to choose it? Because you have to be careful whether this signal, applied signal, may damage this BJT or it may drive it into cutoff even. अगर ये बहुत छोटी सिग्नल होगी तो शायद ये कट ऑफ में ही हमेशा रहेगा, तो एक्टिव रीजन में बीजेटी कभी गया ही नहीं। या कभी कभार ये सिग्नल इतनी पावरफुल होगी, 1 वोल्ट 2 वोल्ट, इट विल ड्राइव इट टू टू सैचुरेशन। अगर कोई शख्स, कोई बच्चा जो हमारे पास साइन वेव आती है पावर सप्लाई से 220 वोल्ट में, उसको कोई एम्पलीफाई करना चाहेगा 220 से 440 फॉर एग्जांपल, you cannot do it by BJT. Why? Because simply if you apply that AC sine wave directly to the BJT, it will exceed the power levels and it will get damaged. तो उसके लिए आपको कोई और चीज देखनी है। इसी तरीके से अगर आप शायद ह्यूमन स्कार्प से आने वाली सिग्नल जो है उनको लेना चाहते हैं, शायद बीजेटी उनको ना ही ले, क्योंकि वो बहुत ही वो माइक्रोवोल्ट्स में होती हैं। while as you see that VCE saturation is 0.3 वोल्ट here, रीजन ऑफ ऑपरेशन जो है वो यहाँ 0.3 वोल्ट है। आपको VCE का जो रेंज है इट इज फ्रॉम 0.3 वोल्ट अप टू सर्टेन वोल्ट्स, से फॉर एग्जांपल 12 वोल्ट्स, लेकिन हमारी जो ह्यूमन का पे जो सिग्नल्स है वो माइक्रो वोल्ट्स में है। तो in that case our BJT will be always in cut off region, so it will not work. That is what I am trying to say. तो बीजेटी को यूज करने के लिए इसकी एक अपनी एक लिमिट होती है, एक रेंज होती है जिसमें ये काम कर सकता है किसी खास सिग्नल के लिए। तो उन सिग्नल्स को भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है, एंड देन वी हैव टू चूज ए बीजेटी वाइजली, वेदर एनपीएन या पीएनपी करना है यूज, सो उसी हिसाब से देखा जाता है, वो हम लैब में उसको डिस्कस करेंगे।
Now we will move to BJT biasing. It is the same topic, BJT biasing. Basically, it is DC biasing. DC biasing. So the way we were using the term biasing in diodes, वही मतलब यहाँ पे भी है. Biasing is basically application of DC supplies in order of in order of improved AC power level. In order of improved AC power level. Okay. So why do we apply DC biasing? I'll tell you in this way. देखिए, अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं, आप इसको समझिए ध्यान से. If I have a BGT here, this is collector, this is collector, this is base, and this is emitter. This is emitter. Just a second. तो आप इसको ऐसे समझें. BJT में तीन टर्मिनल्स हैं, बेस, emitter and collector, and input is always connected between base and emitter. ठीक है. And we also know that the voltage between base and emitter is known as VBE, and it is nearly equal to 0.7 volts. It is nearly equal to 0.7 volt. Now the question is, if the input is like this, अगर ये input ऐसा हुआ, एक साइनोसाइडल सिग्नल हुई, और इसका पीक एम्पलीट्यूड है 0.3 volts. Now see, 0.3 volt is lesser than VBE. VBE is 0.7 volt and your input signal is 0.3 volt. Because it is a weak signal, एम्पलीफायर को वीक सिग्नल्स ही एम्पलीफाई करनी होती है, उसको पावरफुल सिग्नल्स एम्पलीफाई नहीं करनी होती है. सो a weaker signal could be in microvolts also, it could be in millivolts also. तो आई हैव टेकन एन एग्जांपल दैट हमारे पास 0.3 वोल्ट की सिग्नल इनपुट है और वो हम अप्लाई कर रहे हैं बीजेटी को, सो दैट इट विल बी एम्पलीफाइड समवेयर हियर और इसको आउटपुट यहाँ पे मिले हमें. But since VBE is 0.7, it will not cross the junction. It will always keep the junction less than knee voltage. तो ये कभी फॉरवर्ड बायस नहीं होगा. ये जो है VBE, जो आपका बेस इमिटर जंक्शन है, ये कभी फॉरवर्ड बायस नहीं होगा. In that case, the signal will not be detected by the BJT. क्यों? क्योंकि ये 0.7 से कम है. In order to make it detected, what you have to do, you have to add at least, कम से कम इसको 0.7 DC हमें ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके ये बनेगा शिफ्टेड AC. अब आपकी बनेगी यहाँ 0.7 वोल्ट और सिग्नल ऐसी है. 0.7 प्लस 0.3 मीन्स 1 वोल्ट, 1.0 वोल्ट, और यहाँ होगा प्रोबली 0.4 वोल्ट पीक टू पीक. ठीक है. अब अगर आप ये सिग्नल इनपुट पे अप्लाई करेंगे, वी इनपुट पे, तब जाके आपकी जब सिग्नल यहाँ से यहाँ जाएगी तो पॉजिटिव फेज, पॉजिटिव हाफ इसका क्रॉस करेगा VBE को, बिकॉज इट विल क्रॉस 0.7. then only positive half will be amplified. If you want that the negative half should be also amplified, it should also pass through VBE or BE base emitter junction, then you have to make another change. आपको जो DC वोल्टेज बनानी है, it should be at least 1 volt, 1 volt. तो आपकी जो है AC signal वो है अब 1 plus 0.3 would mean 1.3 volt, 1 minus 0.3 would mean 0.7 volt, and 0.7 volt is equal to VBE or it is higher than VBE. तो ऐसी वोल्टेज अगर आप उसको DC वोल्टेज दोगे, तब जाके आपको AC आपकी एम्पलीफाई हो सकती है, या हम ऐसे कहेंगे BJT उसको डिटेक्ट कर पाएगा. अगर VBE से इनपुट सिग्नल कम है, BJT इसको ना ही एम्पलीफाई करेगा क्योंकि उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस नहीं हुआ, because it has at least inbuilt potential or knee voltage equal to 0.7 voltage. It is because of this reason, we go for biasing. So biasing is basically application of DC supplies in order of improved AC power level. Okay. So that we can improve the AC power level, and according the biasing is applied according to the
improved AC power level. अब हम इसको ज्यादा भी नहीं ज्यादा कर सकते हैं amplify. We cannot apply, as per our desire. We have to apply a calculated amount of DC bias. इसको इतना ही करना है अप्लाई सो दैट इट कैन क्रॉस वीबीई, इट कैन क्रॉस वीबीई। अब ये हर किसी सिग्नल के लिए अलग अलग होगा। 0.3 के लिए अलग होगी, 0.5 के लिए अलग डीसी बायसिंग होगी, 0.9 वोल्ट या 0.1 वोल्ट के लिए अलग डीसी बायस होगी। बट डीसी बायस विल बी ऑलवेज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इनपुट सिग्नल्स, एंड दैट इज व्हाई वी गो फॉर डीसी बायसिंग। रिहा बेटा, आपको समझ में आया ये व्हाई डू वी गो फॉर डीसी बायसिंग? Yes, sir. Yes. व्हाट अबाउट उस्मा, उस्मा को भी समझ में आया? Yes, sir. हाँ, ये है असल में नीड फॉर वीसी डीसी बायसिंग। ओके, डीसी बायसिंग की नीड इसीलिए है, व्हाई डू वी गो फॉर डीसी बायसिंग। तो डीसी बायसिंग अगर हम कहें एक तरह की बीजेटी को कॉन्फ़िगरेशन है, यू आर मेकिंग इट रेडी फॉर एम्प्लीफिकेशन। सो अपार्ट फ्रॉम डीसी बायसिंग यू आल्सो नीड एन एसी सिग्नल। एसी सिग्नल अभी हमने दी नहीं है, इस सर्किट में डीसी बायसिंग है ही नहीं, डीसी बायसिंग है ही नहीं, इसमें डायरेक्टली एसी सिग्नल है। तो फिलहाल हम पहले डीसी बायसिंग की बात करेंगे, उसके बाद तीसरा होगा एसी एनालिसिस, दूसरा टॉपिक होगा एसी एनालिसिस। अभी ये है डीसी एनालिसिस। व्हाट इज द बायसिंग वोल्टेज वी शुड अप्लाई फॉर द बीजेटी, एंड ऑब्वियसली एज आई सेड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एसी लेवल्स। जैसे यहाँ 0.3 के लिए आपको 1 वोल्ट है, अगर मैं 0.1 वोल्ट एसी लगाऊंगा then it may be somewhere 0.8, it is 0.8 required। ठीक है, तो अलग अलग एसी सिग्नल्स के लिए अलग अलग डीसी लेवल्स हमें चाहिए। that is why the analysis, dc analysis is important in bjts। so equations used, इसमें अहम इक्वेशन कौन कौन सी यूज होगी? equations used, one is vbe will be always equal to 0.7 volt। In our DC analysis, we will always use, in our DC biasing analysis, we will always use VBE equal to 0.7 volts. Then IE equal to beta plus 1 into IB. Okay, IE is equal to beta plus 1 IB, which is nearly equal to IC. And we will always use this equation, IC is equal to beta times IB. IC is equal to beta times IB. So these are three equations that will be mostly used while we will discuss DC biasing of BJTs. But before we'll go to analysis part, we also have to define operating point. Yani, at what point we are trying to operate the BJT, and what are the DC levels required for that point. Okay, so operating point, which is also known as quiescent point. It is also known as quiescent point or simply Q point. Q point. Simply Q point. Quiescent point, operating point, or Q point. Okay. So what is this operating point? Operating point of a transistor is usually fixed. ये generally fixed होता है. It does not change while you operate a transistor. ठीक है? So hence called a quiescent. Hence called a quiescent point. Hence called a quiescent point. And then you have application of fixed DC voltage, which is known as biasing. Application of fixed DC voltage, which is known as biasing. It actually establishes this point, establishes a fixed level of voltage and current. So once we apply DC voltage,
What is the effect of this DC voltage? It basically establishes a fixed level of voltage and a fixed level of current. What kind of fixed level of voltage? This fixed level जो हम कह रहे हैं fixed DC जो इसमें ज़रूरत है AC के AC को attach करने के लिए, so that it will be shifted to a proper point beyond which it is detected. So corresponding to every voltage there will be current also. That is why I am saying that application of fixed DC voltage, that is biasing, establishes a fixed level of voltage and current. Okay. And for amplification, or for amplifier, this fixed level establishes fixed operating point fixed operating point on the characteristics on the characteristics. See, application of DC voltage establishes a fixed level of voltage and current. अगर हम अब characteristics में जाएंगे तो in output characteristics it can establish a fixed value of VCE and fixed value of IC. Okay, तो अगर यहाँ for example इसका fixed value IC is 30, so somewhere here, and suppose this is 10 volt here, and it has established a fixed voltage of VCE as 10 volts. So it means that it is basically establishing a fixed point in certain area, in certain region. So application of DC voltage, application of this DC voltage, that is the biasing, it establishes a fixed level of voltage and fixed level of current. For amplifiers, we can say then this biasing basically it establishes a fixed level of operating point. अब यहाँ operating point ये बना, ये जो यहाँ पे है, and it is because of fixed level of voltage and fixed level of current. So that is what I said. For amplifier, this fixed level establishes fixed operating point on the characteristics. Okay. And what is that fixed point doing? That fixed point defines the region of operation, the region that will be employed, for operation or amplification, या operation और amplification of सिग्नल. तो सिग्नल को किस पॉइंट पे एम्पलीफाई करना है वो असल में तय होता है डीसी बायसिंग से. सो डीसी बायसिंग डिसाइड्स which signal will be amplified at which region. तो अगर आप डीसी बायसिंग, इसका मतलब है अगर हम डीसी बायसिंग को चेंज करेंगे, this point can move even to this point. It means it will move to cutoff. Or if we change biasing, it can move to saturation also. तो ये पॉइंट दाएं बाएं जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन चेंज इन डीसी बायसिंग, क्योंकि डीसी बायसिंग से आपको वोल्टेज और करंट चेंज होंगी, उसी वजह से आपका ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है ये चेंज होगा. एंड द इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट क्यूसेंट पॉइंट की जो क्यूसेंट या जो फिक्स्ड पॉइंट जो है या जिसको हम ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा होते हैं VCE IC. From the characteristics curve, you can also see that its coordinates will be always VCE and IC. IC and VCE इसके coordinates होंगे. ठीक है, तो इसको हमेशा आप जहन में रखना है. So if we consider this characteristics that we have already discussed, okay, before, of a particular figure as shown. So let me draw the characteristics. Another characteristics मैं यहाँ पे बनाऊंगा. If we consider these characteristics, we can then deduce some more points out of it. So for example, these are characteristics. This is ICEO. Beyond this you have cutoff region. इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो cutoff region है. ये सारा जो है ये है active region. This is all active region, and we know that we have something here which is known as saturation region, जो इससे नीचे होगा.
और यहाँ जो होगा, ये जो ये लेवल है, दिस इज VCE saturation. VCE saturation. It is nearly equal to 0, but it can be equal to 0.3 volts. And this one is our uh, this one is our PC max curve. This is our PC max curve that will identify our, or it will determine our limits of operation. So this is PC max curve. PC max curve जो हमें limits of operation बताएगी. And suppose that IC here, it is IC max is here, IC max is here 25 milliampere, for example. And this point is here VCE max, VCE max, maximum VCE voltage. अब देखिए, suppose in this curve we have four different operating points. We have four different operating points. One operating point is exactly at the origin, another is somewhere here, and third one is somewhere here, and the fourth one is somewhere here. Okay, so let this operating point be A, this is B, this is C, and this is D. So we have four different operating points in this curve, and we know that this is cut off region. ये जो है ये है cut off region, and this one is saturation region. This is saturation region. Okay, and we assume that we have four different operating points. Suppose we have four operating points on it. इस VI characteristics में हमें four different operating points are there. Okay, now we know that saturation region here, saturation region is this region. ये जो region है ये है saturation region. Okay, so this is saturation region. How is saturation region defined? Saturation region in this curve will be defined when our VCE is less than, it is less or equal to VCE saturation. ठीक है, जब हमारी VCE होगी बराबर, this is VCE, this is IC here. So when our VCE will be less or equal to VCE saturation, then only we can say that it is a saturation region. And how can we define cutoff region? Cutoff region, now see, this is corresponding to IB equal to first curve, IB equal to 0 microampere. So cutoff will be determined by this region when our IB is less than 0 microampere. It is less than 0 microampere would mean negative. Now see, we have four different regions, so we will take case 1. Case 1 would mean point A. Let us discuss point A. Now if no biasing are applied, अगर इसमें कोई biasing नहीं apply हुई है, in that case we can say then IC will be 0 and no voltage is applied. VCE is also 0. ठीक है, so if no biasing is applied, case 1 point A, no biasing applied to the circuit, no biasing applied to device, no biasing applied to BJT. So in this case, device would be completely off. BJT, yeah, device would be completely off. Why? Because no current, output current is there. IC 0 है, ऐसे जैसे कि पॉइंट ए पे है, IC भी 0 है, और VCE तो हमने ऑलरेडी 0 ही किया है. ठीक है, VCE तो है ऑलरेडी 0. So the device will be completely off. तो Q point, as I said, Q point के coordinates होते हैं VCE
और IC के. So what will be the coordinates of Q point? Or Q point will be at A. तो Q point हमारा होगा फिर A पे. तो what are the coordinates of A? सर बट A, कट ऑफ रीजन में तो आईसी भी 0 ही होता है ना। ये कट ऑफ रीजन में नहीं है, ये तो असल में ओरिजिन में है. और कट ऑफ रीजन में IC भी 0 होता है. दैट इज ट्रू. एंड आई एम गोइंग टू राइट दैट. सो हियर IC इज 0 एंड VCE इज ऑल्सो 0. तो इनमें दोनों चीजें 0 हैं. तो पॉइंट ए पे, जैसे कि आपने कहा, पॉइंट ए पे, हालांकि अगर हम इसको कट ऑफ भी माने, पॉइंट ए पे क्योंकि कोई बायसिंग नहीं अप्लाई हुई है, तो जब बायसिंग नहीं अप्लाई हुई है तो इसमें कलेक्टर करंट नहीं होगी. प्लीज रिमेंबर दैट बायसिंग voltage is always applied at the collector. This is the biasing voltage. जो ये VCC ऊपर होती है, it is applied at the collector terminal. This is the biasing voltage. So if there is no biasing, then it means that collector current will be zero. Okay. If collector current will be zero, and since no voltage is applied at the collector, so VCE is voltage between collector and emitter. जब collector पे कोई voltage है ही नहीं, emitter तो already ground ही होता है. Emitter is ground. Please note it down. There is no voltage in the collector, then there is no voltage in the emitter. So if there is no voltage in the collector and emitter, VCE, which is voltage between collector and emitter, it is also 0. तो ये 0 है. In that case, your q-send point will be at point A. तो आपके coordinates जो Q point, अब अगर कोई पूछेगा what are the coordinates of Q point या where is the Q point? Q point is at IC equal to 0, VC equal to 0. So it means no current is flowing and no voltage is across it. No current is flowing and no voltage across it. No current flowing and no voltage across BJT. Please remember, in DC analysis we only consider DC power supply. हम AC को नहीं करते consider. तो our BJT is like this. इसमें AC हमने नहीं किया है assume. This is our emitter. This is our base. This is collector resistance. This is VCC. VCC is basically biasing voltage. अब जब biasing voltage 0 है, तो what is VCE? This is C, this is B, this is E. VCE is voltage between collector and emitter. And IC is the current moving into the collector terminal. So IC, when VCC is 0, that means no biasing is applied. It means IC is 0, VCE is also 0. It means no current flowing, no voltage across it. Across it means across BJT. So can we say now point A is suitable? We can say then point A is not suitable. Point A is not suitable for operation. Point A is not suitable. वो इसलिए नहीं है suitable because it results in no current. It results in no current because it is necessary to bias to respond to input signals. Okay, it is not suitable because it is necessary to bias. Biasing करनी जरूरी है. Why? In order to respond to weak input signals. जो कमजोर इनपुट सिग्नल्स है 0.7 से कम है, उनको रेस्पॉन्ड करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए बायसिंग तो जरूरी है. बायसिंग करनी बहुत अहम है. तो पॉइंट ए इज नॉट सुटेबल in this curve. In this curve, the point A is not suitable. So what about point B? अब point B की बात करते हैं. Point B. So we have now point B, and it is case second. Point B. In point B, you will see that if signal is applied to circuit, okay, अगर हम देखेंगे point B को, if signal is applied to circuit, the device will vary the current and voltage from this operating point. ठीक है, इसमें
थोड़ी सी अब हमें हो जाएगी वेरिएशन. कैसे होगी वेरिएशन? आई विल ड्रॉ दिस. नाउ फर्स्ट आई विल राइट डाउन हियर, if the signal is applied to circuit, the device will vary the current and the voltage from the operating point. ठीक है. तो अगर अब इसमें हम सिग्नल अप्लाई करेंगे तो हो जाएगी हमारी, then the device will vary the current and voltage from the operating point. How will it vary? It will vary like this. अब see, the curve is at point B, तो मैं खाली point B की curve बनाऊंगा somewhere here. तो it looks something like this. ऐसे नहीं है. Okay. Say for example, it is somewhere here. Okay. And we know that this is point B. And we know that this is IC and this is VCE. अब देखिए, whenever DC biasing is applied such that this quiescent point reaches point B, फिर अगर आप इसमें कोई AC current add करोगे, then the variations will happen in collector current also. ठीक है, variations will happen. So what kind of variations? Variations will happen like this. Suppose this is the weaker signal, तो इसकी variations ऐसी होंगी. Any smaller variation in collector current will result in large variation in VCE. Okay, it will result in large variation in VCE. Any smaller variation in collector current will result in large variation in VCE. So if the signal is applied to the current to the circuit, the device will vary the current and the voltage from the operating point. अब जब इसमें हमने कुछ सिग्नल दी है, because we know IC here, IC in common emitter configuration, it is equal to beta times IB. What is IB? IB is input current. अब जब हम इनपुट पे साइनोसाइडल देंगे तो IB तो वैरी होगी साइनोसाइडली. So there will be sinusoidal variations in IB. That will cause sinusoidal variations in IC also. So when there will be sinusoidal variations here, so it will cause sinusoidal variations in VCE also. So VCE is nothing but output voltage. तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, if the signal is applied to circuit, the device will vary the current and the voltage from the operating point. रोजा को ये समझ में आ रहा है? यस सर. ठीक है, ये आपको वेरिएशन समझ में आई कि आउटपुट पे कैसी होंगी वेरिएशंस, क्योंकि यस सर. आईबी में वेरिएशंस होंगी. बीनिश को समझ में आ रहा है ये? जी सर. ठीक है, तो we can say that if at point B now see, the point B has been chosen somewhere at a point where it is allowing the device to react to both negative and positive variations. Okay, तो जो ये point B है, ये इस जगह पे किया गया है choose, which is allowing the device to react. 76 को समझ में आ रहा है? तो both Yes, sir. positive and negative variations. अब इसमें जो हो रही हैं, both negative and positive variations of input signal, they are being reacted to. दोनों को अब react हो रहा है. So that is one point. So here, if the input signal is properly chosen, अगर हम input signal को इस तरीके से choose करें, the voltage and current variations will not drive this device into cutoff.
Okay, it will not drive this device into cutoff or saturation, then we can say that it is a kind of acceptable point, it is a good point, it is a very valid point. तो ये point एक ऐसा point है, अच्छा point. अगर हम इसमें voltage and current variations को choose करें properly, we can say that it is acceptable one as compared to the previous one. जो point A था वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, वो it was not good one because there was no reaction to input current, क्योंकि बायसिंग तो थी ही नहीं, तो वीकर सिग्नल्स को तो हम नहीं कर रहे थे रिएक्ट. लेकिन इस पॉइंट पे हम वीकर सिग्नल्स को कर रहे हैं रिएक्ट. व्हाई? बिकॉज देयर आर सर्टेन बेस करंट्स, इसमें कुछ बेस करंट है आईसी, इसमें कुछ डीसी वोल्टेज है वीसीई कांस्टेंट, तो वो चीज तो ऑलरेडी दी है इसमें, ठीक है, तो वो चीज बेहतर है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज पॉइंट सी. पॉइंट सी, पॉइंट सी, point C is somewhere here. It is near cutoff point. Okay, point C is near cutoff point. Now see, point C, it would allow some positive. Point C, it would allow some positive and negative variations of input signal, but the peak to peak value would be limited by the proximity of VCE equal to 0 volts and IC equal to 0 milliamperes. Okay, or ICE nearly, sorry, IC or IC nearly equal to ICEO. Okay, so I'll explain it here. This is another point. ये है हमारा दूसरा point, point C. So point C is somewhere here. Okay, this is point C. Now see, in point C, it will allow some variations. इसमें कुछ variations allow हो सकती हैं, लेकिन ये variations इतनी होनी चाहिए. देखिए यहाँ we know that close to point C there is saturation region also. Okay, and close to point C there is also cutoff region. If we try to project these things here, इनकी जो variations हैं, अगर हम ऐसे करेंगे इनको project, we can see that we have to choose this point very carefully. इसमें या तो ऐसे हो सकता है, इसकी जो पॉजिटिव हाफ, एक हाफ इसमें ज्यादा एम्पलीफाई हो रहा है, यानी ज्यादा वेरिएशंस हो रही हैं, दूसरे में कम हो रही हैं. अगर हम इसको थोड़ा सा और इधर उधर करें, हो सकता है यहाँ की वेरिएशंस जो हैं on the left hand side they will overlap like this, they will ऐसे हो जाएंगी, and some portion of the negative variation will go into the saturation. ऐसा भी हो सकता है. या अगर हम करंट की वेरिएशन देखिए, ऐसा भी हो सकता है that it will go to the cutoff. करंट की जो ये है वो जाएगी into ICEO because this point is your, this curve is ICEO. That's why I say that it would allow some positive and negative variations. Point C allow करेगा कुछ positive negative variations of input signal, but peak to peak values would be limited. इसमें peak to peak values थोड़े narrowly होंगे, यानी बहुत कम variations allow हो जाएंगी. If we allow any random variation with any magnitude, it is also possible that the proximity values VCE0, it may cross that also. तो हो सकता है जो आपकी सिग्नल है, इनपुट आउटपुट सिग्नल, वो सैचुरेशन में जाए, या ऐसा भी हो सकता है कभी कभार वो IC इक्वल टू ICEO क्रॉस करे, वो उस लिमिट को नीचे चले जाए, तो आपको कट ऑफ में चला जाएगा कभी कभी ट्रांजिस्टर. तो पॉइंट C सेफर पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसके नजदीक एक तो सैचुरेशन रीजन भी है और इसके नजदीक कट ऑफ रीजन भी है. वहां पे प्रॉब्लम ये है, कभी आपका ट्रांजिस्टर या तो सैचुरेशन में चला जाएगा या तो कभी कट ऑफ में चला जाएगा. अब अगर वेरिएशंस आपने पूरी कंट्रोल की है, तो एक नैरो रेंज मेंटेन की है, तो आप बता सकते हो यहाँ हम कर सकते हैं ऑपरेट. तो ये यहाँ कर सकता है बीजेटी ऑपरेट, but with some positive and negative variations of input signal. Not every positive and negative variation of the signal.
तो यहाँ अगर हमें करना है, काफी ज्यादा ध्यान रखना है इस पॉइंट पे, बहुत ही कंट्रोल ऑपरेशन करना है, बहुत ही कुछ ही डिफाइंड वेरिएशंस हमें अलाउ करनी है इनपुट सिग्नल में। अगर रैंडमली उसने क्रॉस किया इनपुट सिग्नल में, इट क्रॉस बियॉन्ड दैट रेंज, देन the BGT may be driven into saturation or it may be driven into even into cutoff region. ठीक है? So we can say that at operating at point C, then operating at point C, uh, operating at point C raises raises the concern of non-linearities. तो पॉइंट सी पे अगर आप ऑपरेट करोगे तो हमें बहुत ही ध्यान रखना है, वी आर वेरी मच कंसर्न्ड about the saturation, moving the transistor into saturation or cutoff. In both the regions, both the regions are non-linear regions. ठीक है, non-linear regions. Non-linear region का मतलब है जैसा इनपुट है इस रीजन पे वैसा आउटपुट नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड होगा, वो कुछ अलग शक्ल का होगा। तो at the point C, operating at point C raises the concern of non-linearities introduced by the fact that spacing between IB curves IB curves is not uniform. ओके, जो इनमें IB कर्व्स की जो है स्पेसिंग, वो इस जगह पे यूनिफॉर्म नहीं होती है, तो उससे भी हमें एक वो कंसर्न मिलता है कि नॉन लीनियरिटी होगी। जैसे मैंने यहाँ आपको दिखाया दैट आई हैव ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड इट, दैट नेगेटिव हाफ इज is having smaller variations but positive half it is having larger variations. ये इस वजह से हुई बिकॉज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पेसिंग इन IB कर्व्स। जो ये IB कर्व्स हैं, दीज आर IB कर्व्स, इनमें यहाँ इतनी स्पेसिंग है लेकिन यहाँ कम है। नॉन यूनिफॉर्म स्पेसिंग की वजह से हमें नॉन लीनियरिटीज भी मिल रही हैं। एक तो वो कंसर्न है, और दूसरा कंसर्न है कभी कभार हो सकता है हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो शायद सैचुरेशन में चला जाए या कभी कट ऑफ में चला जाए। तो ए भी अच्छा नहीं है रीजन, सी भी अच्छा नहीं है, बी तो फिलहाल ठीक ही है, बी इज स्टिल गुड। एंड सिमिलरली डी, डी किताब पे दिया गया है, मैं इसको ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं। डी इज नॉट ऑल्सो गुड पॉइंट बिकॉज sometimes it is close to PC max curve. Point D in output characteristics of the transistor is near PC max curve. So there is a concern that sometimes if the variation input signal variations are large, there is a concern that it may cross the PC max curve. I'll draw it here. Point D. Point D की बात अगर की जाए तो it is somewhere here. So suppose it is like this. So you have somewhere here point D. If you now try to identify or quantify these variations, say for example output variations ऐसी हैं, तो हमारी जो इनपुट वेरिएशंस बनेंगी वो बनेगी कुछ ऐसे। अब ये जो मैं ये बेंडिंग कर रहा हूँ कर्व्स की, ये पर्टेनिंग टू ए पर्टिकुलर कर्व कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे पर्टेनिंग टू ए पर्टिकुलर बेस करंट, किसी IB को मैं ले रहा हूँ कांस्टेंट, because IB will be always constant as far as DC biasing is concerned। फिर जो ये वेरिएशंस होंगी वो होंगी बिकॉज ऑफ AC। अब वो एक ही लाइन पे देखी जाती है किसी खास IB पे, तो मैंने जो लिया है, मैंने ये वाला रीजन लिया है अभी। सो आई एम ट्राइंग टू टेक दिस रीजन। ओके, तो यहाँ से इस पॉइंट से लेके ये कर्व स्ट्रेट है, इसी के अक्रॉस मैंने प्रोजेक्शंस की है बेंड। तो यहाँ से यहाँ आएंगी और यहाँ से यहाँ आएंगी। ये टॉप पीक प्रोजेक्शन है, तो हो सकता है यहाँ आएगी। ठीक है, तो समवेयर हेयर। अब अगर आप इसको देखेंगे तो सपोज इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, तो हो सकता है ये ऐसे ही इसकी प्रोजेक्शन, इसकी वेरिएशंस होंगी प्रोजेक्ट। जब IC, when IC will vary, then VCE will vary in this fashion, for example. So in that case you can see now this is VCE max, ये VCE max है।
इस कर्व को तो क्रॉस किया हमने, यहाँ पे ये कर्व तो क्रॉस हो गई। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि पॉइंट डी इज नॉट ए गुड पॉइंट आल्सो। पॉइंट डी भी अच्छा नहीं है, बिकॉज इट विल क्रॉस द लिमिट्स ऑफ ऑपरेशन फॉर द बीजीटी। इस पॉइंट पे ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पीसी मैक्स कर्व को क्रॉस किया जाए और आपका जो है जो आपका बीजेटी है, इट विल गेट डैमेज्ड। सो वी कैन कंक्लूड नाउ, वी हैव एनालाइज्ड ऑल दीज 4 पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट ए, बी एंड सी कहाँ गया, हाँ यहाँ। तो इन सारे पॉइंट्स में हमें एक ही पॉइंट बेहतर लगा, दैट इज पॉइंट बी। जो बाकी पॉइंट्स हैं जो बाकी पॉइंट्स हैं ये अच्छे नहीं हैं, ना ही दे आर नॉट सुटेबल। Point A is not suitable, point C is not suitable, point D is not suitable. Point A is not suitable because no current flows at point A. Point C is not suitable because we have concerns of non-linearity. It may drive the BJT into saturation and sometimes into cutoff. Point D is quite far away from saturation and cutoff, but it may drive the transistor into limits of operation. It may exceed the PC max curve. It may exceed the limits of operation. So we can now summarize, only point B is suitable for the BJT operation. तभी हम अक्सर कहते हैं, in active region BJT is always operated at the center. So BJT, the quiescent point, generally we always choose quiescent point in such a way so that it lies at the center of the active point. Why? Because at the center of active point there are no concerns of non-linearities. There are reduced concerns of exceeding the power limits. So and how do we choose this point? By adjusting the DC biasing. By adjusting the DC biasing. So we do it by adjusting the DC biasing. यहाँ तक कोई सवाल है उस्मा, कोई समझ में आया? Yes, sir. Do you have any question about it? नो सर सर, लेकिन जब हमने लास्ट वाला पॉइंट डी दिखाया ना, तो इसमें जो आपने वेव बनाई, आप एक सेकंड वो दिखाइए। हाँ बताइए। सर जो यहाँ से ये एम्पलीफाइड वेव आई ना, ये कट ऑफ रीजन के बाहर गई ना, तो यहाँ पे क्या डिस्टॉर्शन नहीं होगा? कट ऑफ रीजन, ये यहाँ नीचे से? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं है असल में। देखिए, लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस। तो जब मैंने ये जो सिग्नल दिखाई साइनोसाइडल आईसी की, इट इज नॉट बेसिकली आउटसाइड दिस ग्राफ। इट इज, ये तो मैं वेरिएशन दिखा रहा हूँ आपको। ये मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, ये मैं यहाँ पे भी दिखा सकता था, अब मैं यहाँ पे भी ये दिखा सकता हूँ। ये मैं इस जगह पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे इंटरनल एरिया यूज करना है ट्रेसेस के लिए। तो मैंने इसको प्रेफर किया कि आई विल शो दिस हेयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब इसकी प्रोजेक्शन जब मैं ले रहा हूँ, तो आई एम टेकिंग दोज प्रोजेक्शन सपोज फ्रॉम हेयर, और ये मीट हो रही है इस एक्सिस में एट दिस पॉइंट। नीचे से जो प्रोजेक्शंस हैं वो यहाँ मीट हो रही है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी मैं प्रोजेक्शंस डाल रहा हूँ यहाँ से। लेकिन वहां पे जो मैं वेव बना रहा हूँ इन प्रोजेक्शंस पे, जब मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ ऑन दिस एरिया, इट डजंट मीन कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी कुछ रीजन इसका कुछ हिस्सा एक्टिव रीजन में है इतना सा, और ये सारा है कट ऑफ में। इसका मतलब ये नहीं है, रीजन तो है यहाँ पे, लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो वेव बना रहा हूँ आउटपुट, ये वेरिएशंस में यहाँ भी दिखा सकता हूँ। I can show these variations here also, but it doesn't mean that they are in the cutoff region. On this side there is no meaning, but yes, you have a meaning on x axis। x axis पे कैसे वेरिएशन हो रही है उसका मतलब है, यहाँ पे y axis में मीनिंग है। लेकिन if you are drawing it somewhere here or here or even if here, x एक्सिस में इसकी कोई मतलब नहीं है, आप इसको शिफ्ट इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, y एक्सिस में इसकी कितनी वेरिएशन है, दैट मेक्स सम सेंस। ये है इसकी रेंज। आप इसको यहाँ रखें वहां रखें, इसका मतलब कुछ नहीं है। इवन यू कैन ऑल्सो प्लेस दिस वेव, आप इस वेव को, ये जो ये वाली वेव है, इसको उठा के आप यहाँ भी रख सकते हैं। सी I'll draw it here। कभी कभार किताबों में यहाँ भी बनाई होती है, तो आप इसको यहाँ से भी बना सकते हैं, बात नहीं है। I'll stop now। इसमें किसी को कोई सवाल तो नहीं है?